नहीं वो कौन है मेरे को पता नहीं आप। Nisar, can you please come on stage? Nisar? Only Dignity Foundation, nothing else. कितना कुछ आएगा बैग में। मैं दिख रही? सर आप एक मिनट स्टेज पे जा सकते हो। हाँ मुझे पता है कि मैं माइक के पास खड़ी रहूंगी तो मैं दिखूंगी कि नहीं। हाँ ऐसा आएगा, ठीक बोर्ड पे है। आएगा। ये नहीं तो इनको है ना, ये जो माइक है ना, ये यहाँ पे खड़े रहेंगे ना तो और नहीं चलेगा, चलेगा ना इतना दूर। हाँ बीच में ऑडियंस भी ले लूँगा। अभी तक 0 है। लाइव हो गए हम लोग ना। लाइव पे हो गया। लिंक उन्हें बोला लिंक तुम्हें भेजे और तुम वो लिंक तीनों ग्रुप पे डालो। डिग्निटी तीनों पे। दिसून जाणार तरी पण खूप वाईट आहे ना। अभी लाइव कर दिया है। हाँ ये चालू हो गया। आपके पास है क्या और? ठीक है ना? नहीं कहाँ से आ रही है? हाँ डेली ये पूरा करना पड़ेगा आगे तक। Everyone, we are starting shortly. Okay, let us start. डिले आधा मिनट, हाँ 30 सेकंड डिले। एक मैम अभी है लाइव। सब लोग आ गए अभी बढ़िया से। यहाँ पे है वेरी गुड। कितने कितने लोग की नैप हो गई बढ़िया से? नहीं अभी तक नहीं। क्या बात है, लुक एट द एनर्जी, पावरफुल, वेरी गुड। जैसे मैंने बोला, देख रहे हैं आसपास, स्माइल कर रहे हैं ना सब हर कोई? यस वेरी गुड। ओके रूही, ओवर टू यू। ओवर टू रूही। जोरदार ताले से रूही का स्वागत करते हैं, who is behind the force of organizing this wonderful event. Over to you, Ruhi, please. Good morning, everyone. Am I audible? Yes. Very much. I'm Ruhi, and I'm working as a program manager in Dignity Foundation, Pune. I'm deeply honored and privileged to stand before you today on this significant occasion as we come together to observe World Alzheimer's Day. I would like to extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished chief guest, Ms. Sujata Javan from Inner Wheel Club of Pune, Dr. Raina from Satyanand Hospital. I would like to welcome my amazing Chai Masti members and everyone else present today. This day holds great importance for our Dignity Foundation as it allows us to raise awareness and join hands in the fight against a condition that affects millions of lives around the world. Alzheimer's is a condition that not only touches the life of those who are diagnosed with it, but also their families, their friends and caregivers. It challenges our compassion, resilience and dedication. However, it is through moments like today that we can find the strength to unite, to educate and to advocate for change. And with this note, let us begin today's program. I request everyone to kindly stand up as we play Dignity Anthem. All the senior citizens who cannot stand are requested to kindly remain seated.
एवढं नाही. And we have the fan on, it's very hot. नॉट वर्किंग. You should have a fan that's working, no? So only one fan in the place. सो हॅलो, थोडा वेळ फोन करतो तुला, एक तासाभरात. हम बड़े बुजुर्गों का कहना धरती में सुनो आवाज़ सुनो। हम बड़े बुजुर्गों का कहना धरती में सुनो आवाज़ सुनो। आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो। बरसों से देश की सेवा की, जनहित में तन मन वार दिया। इस समाज को हमने आज वो संस्कार और प्यार दिया। जीवन की संध्या बेला में खुशियों के पल दो चार मिले। आपका साथ, आपका प्यार मिले, अधिकार मिले। हम आज हिंद की जनता के संग, हम आज हिंद की जनता के संग करते हैं आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो। दिल से निकली आवाज़ सुनो। हम बड़े बुजुर्गों का कहना करते सुनो, आवाज़ सुनो। हम बड़े बुजुर्गों का कहना करते सुनो, आवाज़ सुनो। आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो। Jessie, they look videos to me. Don't look for the real Thank you everyone. Now let me brief you about Dignity Foundation. Dignity Foundation is a non-profit organization working for geriatric care for the last 27 years. The foundation has been implementing various programs for this segment, right from low socioeconomic to middle income groups. Across Mumbai, we are present across Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru and of course Pune. In Pune, we have the following programs. We have 3 Chai Masti centers in Vanavri, Kalyani Nagar and Magarpatta, where senior citizens do various range of activities related to geriatric health and entertainment. They bond and explore their hobbies and talents. We have 3 loneliness mitigation center in Siddharth Nagar, Bhim Nagar and Antule Nagar, commonly known as the Leprosy Colony. As the name suggests, Loneliness Mitigation Center, here we address the deepest fear of an individual, the fear of being lonely. We work on their daily routines. We organize their daily routine activities, promoting their individual growth and mental development. We also have a ration drive. Feeding others is a very Indian concept. And we have been able to arrange monthly ration kits through the help of various donors to the underprivileged senior citizen of Antule Nagar, Bhim Nagar and Siddharth Nagar. Nisar, calm down. Yeah. And finally, we have our Dementia Daycare Center in Vanavri. Here we provide unique services to the senior citizen living with dementia, like physiotherapy, occupational therapy, yoga, dance movement therapy, art and craft. We provide them healthy and nutritious meal. The members are picked up and dropped back from their home. Now let me show you 2 videos by which you will understand about Dignity Foundation more.
Hello everyone, I'm Ruhi. I'm working as a program manager in DBT Foundation, Pune. In Pune, we have the following programs. We have 3 CMC centers, we have 2 LMC centers, 1 dementia daycare center, and a ration drive. क्या बोल रहे हैं I'm Jayanti Madan Gopal, coordinator of Child Nursery Center at Kalyani Nagar. Actually, we struggled a lot for a place. So this is the third place which we have come. So hopefully we should be here. It's a very nice place, and then they were very considerate and very kind to give this place. Having our soul. And then I came to about the foundation. And when we joined there, they were very good family, friends now, with whom they have stayed. And they is the best thing which happened to old people now. They have something to look forward to in the evening. It's a wonderful thing which has happened. And because loneliness is a great problem with the elders. And it's a place with their friendships, lifelong friendships, and fulfilling and just a good bonding. We have one more. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and home with me again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life is a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, ya la la la, shaboom, shaboom, ya la la la, shaboom, shaboom, ya la la la, shaboom.
welcome dance by our dementia daycare members and our very hard-working caregivers. So everyone, please welcome them. फोटो भी लेना है कि वीडियो लेना है? हाँ, इनका फोटो करना है वीडियो करना है? फोटो ले ले, मुझे पता नहीं। हाँ, वीडियो ही ले ले तो है ना? वीडियो ज़्यादा काम आएगा। फोटो में फोटो यूज सकता है क्या? ये तो बस सेट करके छोड़ना है। गिर नहीं जाए बस। ये मैं हो लाइट्स है स्टेज पे। लाइट्स है ना? राइट से बढ़ाइए। ये ना अभी के लिए लगा। ये नहीं ललित इधर है। इसका लाइट ललित आ रही है। लाइट चालू कर बंद मत करो। स्विच इट ऑफ। बस 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 यश, तू ना वो साइड रहना, लाइव के बीच में मत रह। परफॉर्मेंस के साथ में वो सिर्फ इसके सामने कंटिन्यूसली मत लाइव We will just welcome them all. Ready? जैसे इसका नाम है रूही।
Yeah, put your hands together. Now we are going to have Nukkad Natak by an amazing group called Rangmanch. They have travelled all the way from Bombay to perform today. Kindly welcome them. Check, check. Check. Check, 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 check. Hello, hello. Hello. Good afternoon all. Hello. कैसे हैं सब? ठीक है? तालियां बजाएं। थैंक यू। तो जैसे कि यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम के दौरान एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन यहाँ पर किया है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? नहीं आ रही है तो मैं माइक का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि बोलो आ रही है। बट अंकल मेरी आवाज आ रही है आप तक? पीछे ऊपर वाले लोग हैं ना, पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है आप तक सर जी? नहीं जाएगी। ठीक है, माइक गया। थोड़े उम्र वाले हैं, उनको नहीं सुनते। हाँ वो अच्छा है, वो स्टैंड रहेगा तो स्टैंड चलेगा। स्टैंड है सर थोड़ा पीछे ले लो, आगे आगे ले लो थोड़ा। अजून काय करता है? स्टैंड आएगा सर आगे ले लो और आगे आगे ले लो।
स्टैंड को थोड़ा फिर आगे ले लो ताकि आप इसमें भी आ जाएंगे। लाइव चल रहा है ना। यहाँ पे करूँगी ऐसे। एक माइक आपके पास है? पीछे वो गाना चाहिए। गाने की स्टैंड एक और नहीं है, वो लेके आए। तो यहाँ पर अभी नुक्कड़ नाटक को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साइलेंस, मोबाइल जरा बंद करो। वो गाने की आवाज आ रही है, स्पीकर से आ रही है मोबाइल में। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एक नुक्कड़ नाटक यहाँ पर हम लोग अभी पेश करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं है, एक 15 से 20 मिनट का हमारा ये नुक्कड़ नाटक होगा और जानकारी पूर्वक, और आज का जो विषय है उसी पर आधारित ये नुक्कड़ नाटक। तो हम शुरुआत करते हैं इस नुक्कड़ नाटक को। बोलून जाना पाठीमागच्या किसे ठेवून टाका. हां असं मी ठेवलं. Go out of control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, all is well। हर मुर्गी के घर में अंडे का क्या होगा? क्या होगा? लाइट मिलेगी या तब इसमें फ्राई होगा? क्या होगा? कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा? क्या होगा? और घुमा सीटी बजा के बोल, भैया all is well, ओ भैया all is well, all is well। सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे डिग्निटी फाउंडेशन में। और हमारे ये रंगमंच के कलाकार आपके सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक पेश करने वाले हैं। इस नुक्कड़ नाटक का नाम है हमारी यादें। जाने लगी हो वही चले जाते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? तुम्हारा पति। चार पति? अरे मतलब मेरा पति परमेश्वर। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ कि नहीं? हाँ हाँ बाबा पति हो, कितना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुम कहाँ गई थी? अरे मैं गई थी बाजू वाली के घर पे। वो जाने दो, आप मेरे नाम से इतना क्यों चिल्ला रहे थे? अरे क्यों चिल्ला रहा था मतलब? अरे? तुम्हें पता है क्या आज क्या है? क्या है आज? अरे पगली, उस चीज का इस्तेमाल करो जब तुम उस चीज का इस्तेमाल जब कभी करती ही नहीं हो। मतलब क्या? तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करो। करो। आपको खाना खाना है ना घर में? हाँ, अरे मतलब तुम याद करो आज क्या है। हाँ, तो आज क्या है? क्या है? क्या है आज? क्या है आज? याद आया? बोलो। आज ना हाँ। गुरुवार है। अरे वो सबको पता है। उसके अलावा आज क्या है? आज क्या है? हमारी शादी की सालगिरह। क्या बात कर रहे हो? हाँ। हैप्पी बर्थडे जी। मेरी बीबी चौकी में 4 बार फेल हुई है। सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी की इज्जत निकालो या? अरे पगली, उसको हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं। माता जी हाँ? हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, ठीक है। अभी एक काम करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। हाँ। जल्दी से टिफिन लेके आओ। हाँ ले लो। हाँ? मतलब बनाया है मैंने। हाँ, तो देखो। टिफिन बनाया मैंने, ये लो। कौन सी सब्जी है? हाँ करेले की। करेली। आपकी तरह ही बनाई है। अच्छा, ठीक है। चलो चलता हूँ। अरे चलता हूँ क्या? क्या हुआ? वो पिताजी कहाँ गए आपके? अरे वो मॉर्निंग वॉक उधर वो लाफ्टर क्लब में गए होंगे। अरे देखो जरा, उनको ढूंढो जरा, मुझे हमेशा परेशानी होती है, यहाँ वहाँ उनको ढूंढना पड़ता है। अरे। एक तो मैं कहीं काम करती हूँ, हाय राम बहुत। अरे उतना समय नहीं है मेरे पास। देखो, अगर मैं आज भी लेट पहुंचूंगा तो बहुत चिल्लाएंगे मुझे। चलो मैं निकलता हूँ। बाय। अरे सुनो तो। देखा दोस्तों,
ये थे हमारे अजय भाई साहब और उनकी पत्नी लज्जो। कितने हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। और अभी वो जो बात कर रहे थे उनके पिताजी की, यानी के चंपक लाल की। जी हाँ, चंपक चाचा जो इस वक्त गए हैं उनके लाफ्टर क्लब में। वहां पे कितने लाफ्टर फूट रहे हैं, आप सभी देखना चाहते हो? देखना चाहते हो तो चलो दिखा जाओ आपको। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। और कैसे हो? हाँ, बढ़िया बढ़िया। सब ठीक है? तुम कैसे हो चंपकलाल? चंपकलाल को भूल गए। तुम्हारा नाम है, भूल गए क्या? चंपकलाल वो अभी होगा भूल गए हो। अभी उम्र हो गई है ना। अभी क्या है ना, घुटनों में बहुत तकलीफ होने लगी तुम्हारे है। और तुम्हारा? हाँ हाँ पता है भाई, हमारी भी कमर दुखती है हमेशा ही, हमको पता है। तो एक काम करो, क्या? तुम दोनों मुंह लगाओ। मुंह लगाए? अरे मुंह लगाए? पगले, अरे मुंह लगाओ मतलब वो मुंह नहीं, मुंह नाम की क्रीम आती है। अच्छा अच्छा, गिरी में क्या? लगाते लगाते। ठीक है, अच्छा। मैं जरा पेट क्या जाते हो, हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? क्यों जमा हुए चंपकलाल? क्यों जमा हुए हम? अरे हमारा लाफ्टर क्लब है ना। हंसना है, हंसना जरूरी है। ये क्या है ना, हंसने से उम्र बढ़ती है। आपको बढ़ानी है ना उम्र? मुझे बढ़ानी है। बढ़ानी है ना? चलो हंसते हैं, आप सभी हंसो, जोर से हंसो। चंपकलाल, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे हंसना है ना, हाँ, लेकिन एक दूसरे में नहीं हंसना है। तो खुद पर खुद के लिए हंसना है, खुद के लिए। आप लोग भी हंसो, जोर से हंसो। एक, दो, तीन। मैं भी थक गई, अभी जाके किधर बैठ जाती हूँ। तुम बैठ जाओ, मैं तो घर पे जाता हूँ। घर पे बच्चे राह देख रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? घर पे जाना है। अरे इनको भी साथ लेके जाना। अरे वो जाएंगे ना चंपकलाल घर पे। आप घर पे जाओगे ना? हाँ जाऊंगा, उसमें घर में जाने के लिए क्या है? कहाँ पे है घर? वो भूल गए। इनको विमला चाची का घर बराबर याद है। विमला पता है विमला? ठीक है, एक काम करो, हाँ बोलो। तुम लेके जाना इन्हें घर तक छोड़। हाँ कोई बात नहीं, मुझे उनका घर पता है, मैं उनको घर पे छोड़ दूंगा। अच्छे से लेके जाना। हाँ ठीक से लेके जाता हूँ। हाथ छोड़ना मत। अच्छे से लेके आपको जाना। पता है मेरा घर? हाँ मुझे पता है, हमेशा तो मैं ही लेके जाता हूँ, तुम्हें क्या पता है क्या है? हे भगवान, ये बाबूजी ना कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। घर में इतना सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है और मैं अकेली क्या। आपको पता है ये छठी बार कर रहे हैं पूजा घर में। बाबूजी, अरे बाबूजी, एक काम करो बहू, चाय पिला दो। चाय देखा, चाय पिला दो। सुबह से 4 बार चाय भी पी चुके हैं। बाबूजी पूरे घर में धुआं करके रखा है। 6 बार पूजा कर चुके हो आप, 4 बार चाय भी पी चुके हो। याद है? मैं भगवान के सामने तो सच बोल। भगवान अब तू मुझे जल्दी से उठा ले। एक काम कर, नहाने के लिए पानी डाल। क्या हो गया? क्या आ गए आप? हाँ, अरे आपको कुछ पता भी है आपके घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या हो गया? बाबूजी को देखो जरा, हमेशा की तरह आज सारी चीजें भूल गए। अरे यार, उधर ऑफिस में उधर बॉस का टेंशन, घर में आऊंगा तो ये तमाशा। अच्छा, हाँ। आपको घर में तमाशा लग रहा है ना? हाँ। मुझे बताओ, ये आपके बाबूजी सुबह से 6 बार पूजा कर चुके, 4 बार चाय पी चुके, तो भी पड़ोस के घर में जाके क्या बोलते पता है? क्या? बोलते मेरी बहू मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं देती। नहीं देती। बाबूजी ये क्या बोल रही है? हाँ, ये रोज का नाटक हो गया आपका। ये डेली आप ऐसे ही कर रहे हो, ये सारी चीजें भूल रहे हो। अगर आप ऐसे ही
ससुर है, थोड़ा ध्यान दोगी तो क्या होगा? अच्छा, मैं ध्यान दूं? आपको पता है ये क्या करते हैं? पड़ोस में जाके मेरी बुराई करते हैं। पड़ोस वाले भी कंप्लेंट लेके आ रहे हैं घर पे। बाबूजी कितनी बार आपको समझा रहे हैं? हाँ, एक काम करो, जाओ आपके रूम में और आराम करो। अभी ठीक है, मैं जाता हूँ मेरे रूम में। बाबूजी इधर जा रहे, उधर? अरे इधर आओ, आपका रूम इधर है, जाओ उधर। देखा, अब ना हर रोज एक एक चीज ज्यादा की भूलने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है आपके बाबू नाटक कर रहे हैं। ये छोड़ो वो सब, चलो जाने दो। कल मेरी बॉस इधर आने वाली है, कल मेरी मैडम यहाँ पर आएगी और मैडम के सामने ये सारा तमाशा नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ, तमाशा तो मैं ही करती हूँ, है ना? आपके पापा तो कुछ भी नहीं कहते हैं। अरे मैंने ऐसे बोला क्या? तो फिर ऐसे क्यों बोला आपने? उनके सामने झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। मैं झगड़ा करने वाली हूँ, मुझे कुछ बताओ, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे बहू, कभी कुछ टाइम पे नहीं देखती, हर बार मांगना। बहू, दादाजी आप आ गए। दादाजी, ये किसका बच्चा है जिसको भी दादाजी बोलता है? हाँ दादाजी, हाँ। मैं आपका पोता भूल गए आप। अरे चिट्टू, अरे बेटा मेरा चश्मा देखा, उसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा दादाजी, हाँ। ये तो चश्मा आपके सर पर ही है। हाँ। अरे क्या हो गया बेटा, अभी उम्र हो गई, ध्यान नहीं रहता। कोई बात नहीं दादाजी, आप भूल गए ना तो मैं आपको याद दिलाऊंगा हमेशा। तू ही एक है घर में जो मुझे हर बार अच्छे से ध्यान देता है। अच्छा दादाजी, मेरा लॉलीपॉप लाया आपने? चॉकलेट ना? हाँ, वो ऐसे लगती है, उसके ऊपर चॉकलेट होता है, ऐसे खाते हैं। लाया? नहीं बेटा, भूल गया, कल लाऊंगा। कल कल आएंगे? अरे एकदम याद से लाएंगे? याद से लाऊंगा बेटा। हाँ हाँ, भूले तो मैं याद दिला दूंगा। ये मैं जाऊँ खेलने? जा, ठीक से जाना, आराम से। भागे गली गली के बच्चे आते दादाजी के, अरे उम्र हो गई है। देखा दोस्तों, तो ये थे चंपकलाल। आपने देखा उनके साथ उनके घर में किस तरह बर्ताव होता है। एक तरफ उनके बेटे हैं जो छोटी छोटी बातों पर उनके ऊपर गुस्सा होते, चिल्लाते, और दूसरी तरफ उनका एक छोटा सा पोता है जो बड़ी ही समझदारी से दादाजी ने भूली हुई बातें उनको याद दिलाते। अभी चंपक चाचा की लाइफ में आगे क्या होता है आप देखना चाहोगे? जरूर, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ चंपक चाचा की लाइफ में। चले चलते। भगवान, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन नहीं होता ये सब खाना मैंने बनाया है। वाव, पाव भाजी। ये क्या? ये मैंने बनाया? अरे हाँ, ये तो मैंने ऑर्डर किया है, किसी को बोलना मत। लज्जो, हो गई सारी तैयारी? अरे सब तैयारी हो गई है। देखो मैंने क्या क्या बनाया। ये खीर भी बनाई है, और आपके मेरे को पसंद है ना, हाँ। इसलिए देखो पाव भाजी बनाए, और? छोले भटूरे भी बनाए, गुलाब जाम वो भी मैंने ऑर्डर नहीं किए, मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैडम कभी भी आ सकते हैं। देखो अभी टाइम तो हो गया है, आती होंगे, अभी रास्ते में होंगे। अच्छा, ओके नाउ हाँ लगता है आ गई। जल्दी देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर अजय। कैसे हैं मैडम? हेलो। और ये क्या, आप अकेले आते हैं? सर का है? अजय, आपको पता है ना, सर नहीं आते किसी के घर पे, है ना? हाँ। मैं तो आई हूँ ना। हाँ। हाँ, ये लीजिए मैम। तो थैंक यू। चाय रखो, चाय रखो। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ये लीजिए। अरे बहू, चाय पिलाना यार। बाबूजी, हाँ आप 2 बार चाय पी चुके हो। इतना देर क्यों हुआ आपको? एक नंबर की छुट्टी है। हाँ? 2 बार चाय मैं पीऊंगा। ठीक है, उनको एक कप चाय पिला देना। देख, हर पानी रखा नहाने के लिए। बाबूजी, आप नहा के ही गए थे ना लाफ्टर गार्डन में। झूठ पे झूठ बात करेंगे, अभी रूम से आया हूँ मैं। अरे बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, उनको पानी रख देना, नहाना है उन्हें तो नहाने दीजिए। चलो चलो। एक बार, अरे जोधपुर वाली का कितना भाई, हाँ? कैसे हो? ठीक हो? अरे बाबूजी, वो जोधपुर वाली चाची नहीं है, तो ये मेरे ऑफिस की बॉस है, बॉस मेरी मैडम। नमस्ते नमस्ते। वो क्या है मैडम, वो हमारी चाची आपकी तरह दिखती है, तो उसकी वजह से वो मतलब बोले होंगे। इट्स ओके, फाइन मत करना। ठीक है, चाय पिला दो, मैं जाता हूँ रूम में। बाबूजी, हाँ, यहाँ कहाँ जा
लेकिन हम दोनों उनका इतना अच्छे से ख्याल रखते ना, दवाई हर वक्त हम टाइम पे देते हैं, खाना भी टाइम पे देते हैं। क्यों जी? बहुत ख्याल रखते हैं उनका। अभी देखा मैंने आपने कैसे ख्याल रखा उनका। हाँ, मैंने सब देखा मिस्टर अजय। मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि आप उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि उन्हें डिमेंशिया नाम की बीमारी हो सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो चीजें भूल जाते हैं, वो चश्मा कहाँ पे रहते हैं वो भूल जाते हैं, कभी कभी तो अपने पोते को या फिर अपने रिलेटिव को भी भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है, और ये मजाक नहीं है। नहीं है, आपने बहुत सीरियसली ले लिया, लेकिन हम लोग सच में लेके जाएंगे। ठीक है मैम, चलो खाना खाते हैं। चलो बाबूजी को लेके जाते हैं। चलो बाबूजी, चलो। हाँ। नमस्ते। कैसे हो बेटा? बाबूजी कैसे हैं? अच्छा। बाबूजी अब यहाँ आइए जरा। नहीं, बीमार है ये मेरा बच्चा। बीमार नहीं हूँ, ये अक्सर बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब आपको पता है क्या, ये हमारे बाबूजी है। पहले तो छोटी छोटी चीजें भूलते थे, अभी तो इनका भूलना इतना बढ़ गया है कि सुबह मैंने आज इनको 2 बार खाना दिया तो भी बोल रहे कि मैंने खाना खाया ही नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। हमारे फैमिली फ्रेंड ने हमें बताया कि इनको शायद कोई भूलने वाली बीमारी हो गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये इनको जो कुछ हो रहा है, जैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये कब से हो रहा है? कैसे शुरुआत हुई इसकी? 5-6 महीने से हो रहा है। शुरुआत में तो छोटी छोटी चीजें बोलते थे, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही मतलब भूलने लगे हैं। वो अपना कमरा तक भूल जाते हैं। हाँ। मुझे लेके जाना पड़ता है, उनका कमरा दिखाना पड़ता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इन्हें डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया? हाँ, मतलब डिमेंशिया मतलब हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कम होती है। समझे? इसमें अल्जाइमर में बोलता है। अल्जाइमर की वजह से क्या है, हमारे दिमाग की जो पेशियां होती है वो पेशियां कम होती है, और उसकी वजह से हमारा दिमाग जो जितना काम करता है वो काम करना कम होते जाता है। मतलब मान लो हम जो दिमाग की वजह से हमारी कोई भी बातें याद रखते हैं, कोई भी बातें समझते हैं, फर्क कर पाते हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगती है। अच्छा। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब ये सबको कम होती है क्या ये बीमारी? हाँ, ये सबको होती है, लेकिन ज्यादातर ये जो बीमारी है वो औरतों को ज्यादा होती है, क्योंकि औरतें जो है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा दिखती है, इसलिए उनको होने का मौका ज्यादा होता है। अच्छा। और याद रखिए, ऐसे किसी को भी, जिस किसी को भी ऐसा अल्जाइमर हुआ होगा तो उनको अकेला कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने घर में कहीं भी कुछ भी चीज होगी, मान लो कि गैस है, वो अगर खुला छोड़ के अगर भूल गए तो उनके लिए वो धोखा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अब हम लोग करें भी तो करें क्या? हम दोनों जॉब पे जाते हैं, हाँ। सुबह जाते डायरेक्ट शाम को आते हैं, पर इनकी तरफ ध्यान कैसे दे? देखिए, अब दिन भर जॉब पे रहेंगे बराबर, हाँ। शाम को घर पे तो आते होंगे, तो दिन भर के लिए इनके ख्याल रखने के लिए हमारे अपने पुणे में ना डिग्निटी फाउंडेशन है। अच्छा, पता है क्या आपको? डिग्निटी फाउंडेशन है जो उनका डे केयर सेंटर है, जहाँ पे ऐसे अल्जाइमर हुए व्यक्ति को हम डे केयर के लिए वहाँ पे छोड़ सकते हैं। वहाँ पे उनका स्टाफ जो है वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं उनका। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हमें एक सवाल है, हम वहाँ पर रखें, लेकिन उनका ख्याल कौन रखेगा? उनका खाने पीने का, जैसे अभी वो चीजें भूलने लगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा उधर? अरे, इस बात पर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, वहाँ पे जो स्टाफ है, वहाँ पे जो कर्मचारी है, उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे, और खाना पीना भी बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, अच्छा न्यूट्रिशन के साथ लंच और नाश्ता वगैरह देते हैं, और उसके अलावा एक्टिविटीज भी होते हैं वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि फिजियोथेरेपी है और आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज होते हैं, थेरेपीज होते हैं, जिनसे उनका मन बहला रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन हम लोग ना देखेंगे, क्योंकि क्या है ना, हम उनको लेके जाए, लेके आए, है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा। अरे, आप उसके लिए भी निश्चित रहिए। आपको पता नहीं कि डिग्निटी फाउंडेशन पिकअप ड्रॉप सुविधा भी उपलब्ध कर देती है। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके जो पेशेंट है या कोई जो रिलेटिव है, उनको वो घर से पिकअप करके अपने यहाँ पे लेके जाएंगे और फिर आपके घर पे ड्रॉप करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बाबूजी को हम लोग लेके भी नहीं जाने की जरूरत है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है, न्यूट्रिशन बड़ा खाना भी मिलता है, और इतना ही नहीं, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज भी करने को मिलेगी। बिल्कुल। क्यों बाबूजी, जाना है
हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे दादाजी, आप चिंता मत करो। देखिए आपने ये जो बातें बताई है तो इनका हमें तुरंत, वो तो आप वहाँ पे भेजिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनका तुरंत इलाज भी शुरू करना चाहिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले उनकी जांच करनी पड़ेगी। जैसे कि सीटी स्कैन है, MRI है, ये सारी जांच करने के बाद जो है हम उनका ट्रीटमेंट भी शुरू करें। देखिए ये बीमारी ऐसी है कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं होती, ओके, लेकिन इसके ऊपर जो दवाइयाँ है उससे हम जो भूलने की हमारी जो स्पीड है उस पर हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ये बीमारी कम हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि तुरंत इनकी चेकअप वगैरह करके ट्रीटमेंट का शुरुआत करना जरूरी है। जरूर करेंगे। क्यों बाबूजी, आप रेडी हो? करो करो, खाली ये इंजेक्शन से डरता है, वो बचपन से आदत है उसको करने की। जैसे आपकी दादाजी आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। ठीक है, चलो फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी को बोल के ना आया था। चलो। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे चंपक लाल, जिनके साथ डिग्निटी फाउंडेशन का पता चलने के बाद उनके बेटे जो है वो वहाँ पे लेके जाने का उन्होंने डिसीजन लिया है। आपके साथ भी अगर कोई ऐसे इंसान हो जिनको इस तरह से अगर कोई तकलीफ हो तो प्लीज मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि डिग्निटी फाउंडेशन की पूरी जानकारी लीजिए, उनके कार्यकर्ता जो है स्टाफ है उनसे संपर्क कीजिए और डिग्निटी फाउंडेशन की सुविधा लीजिए। दोस्तों हमारा ये नुक्कड़ नाटक आपने बड़ी शांति से देखा, इसलिए डिग्निटी फाउंडेशन की ओर से और रंगमंच के कलाकार की ओर से हम सभी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद Thank you, Rangmanch. I hope everyone enjoyed the performance. We now have Dr. Raina from Satyanand Hospital to share his knowledge about Alzheimer's. I request Mr. Gopal Asthana to kindly felicitate him. Dr. Raina has always supported us in various programs and today he provided his ambulance as well. So, thank you so much, sir. I can tell you, Dr. Rana has been a great friend, always very cooperative, and more than a chairman of the Satyanand Hospital, he is more a motivational speaker and a philanthropist. Give him 3 hands. Thank you so much. Yeah, so thank you, Rui, for inviting me for today's interaction with you. I'm very happy to be here. So, most of my speech or talk has been already stolen by my Nukkad doctor. So, I have nothing to say. So, it was really nice. We should give a big hand to the Nukkad doctor. Because he elucidated very important points in a very nice way. I don't think it could have been done better. But fortunately, I have got something else to tell you. And that is more important. So I'll be talking to you as a doctor, as a psychiatrist, where I deal with elderly also, and as a Yoga Nidra practitioner and a researcher. I have been doing research in Yoga Nidra for many years in National Institute of Naturopathy, Pune. I have written a book also on the subject.
of Yoga Nidra. So I'll just briefly touch about psychiatric aspects of Alzheimer's. So Alzheimer's क्या है? Hello, this is better. So Alzheimer's में, what is Alzheimer's? Alzheimer's is a commonest type of dementia. और dementia क्या है? Dementia is a disorder of memory. याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं. Of thinking, person cannot think. Particularly time to orientation to time. क्या time of the day है? Place में कहाँ हूँ? वो गुम जाते हैं. Familiar place में घर से थोड़ा दूर चले जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे. Memory forgetful होंगे, चीज़ कहीं कहाँ रखी 10 मिनट पहले वो भूल जाएंगे. जैसे इन्होंने नुक्कड़ डॉक्टर साहब ने कहा कि वो गैस चालू किया फिर बंद करना भूल गए. So memory is the main thing which is getting affected. Then thinking, as I said, orientation to time, to place, to person. Like as a Nukkad actor was, not able to recognize his son. तो आदमी को नहीं पहचान पा रहा है. तो ये commonest disorientation है. To time, to place where they are, getting lost, and to person not being able to recognize the person. In addition, and because of this, memory being affected, thinking being affected, so what will happen? The behavior will get affected. Person will behave odd, behave abnormal, like our actor in the Nukkad was doing. So they have very nicely put across all the points. Now about Alzheimer's. As I said, it's the commonest. There are many other types of dementia. But the commonest one is Alzheimer's. And today is Alzheimer's Day, so we are talking about Alzheimer's. In Alzheimer's, basically, what is important is to detect the early warning signs. A person is forgetful. The person is asking repeated questions, cannot remember names, cannot manage their money. भूल जाते हैं किसका पैसा किसको देना है, कितना देना है, like that. All the judgment will be affected. They will take wrong decisions. So these are various early warning signs. But one typical thing I will tell you. In memory, what is affected most is the recent memory. Like a person will not be able to remember what they had for breakfast in the morning, but they can tell you in detail what happened 40 years back. And this often leads to a problem. When patients of Alzheimer's are brought to me and I tell them इनको dementia है, नहीं डॉक्टर साहब ही तो 40 साल बातें बोलते हैं, वो किस दोस्त के साथ क्या किया था. But the problem is उनको पुरानी चीजें याद रहती है, इसलिए वो पुरानी चीजें ही ज्यादा बातें करते हैं. इमीडिएट रिसेंट मेमोरी याद नहीं होती है, वो भूल जाते हैं. और फैमिली को लगता है नहीं इनका मेमोरी फर्स्ट क्लास है, ये तो 40 साल 50 साल की बातें कर रहे हैं. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट अबाउट मेमोरी. सो द रिसेंट मेमोरी इज अफेक्टेड, नॉट द रिमोट. रिमोट मेमोरी गेट्स अफेक्टेड मोर लेटर इन द एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज. एक फिर टेस्टिंग, हाउ डू यू फाइंड आउट. तो जहां ये अर्ली वार्निंग साइन आपको होते हैं, तो दैट इज द राइट टाइम टू गो एंड विजिट अ डॉक्टर. बिकॉज वन बैड फैक्ट अबाउट Alzheimer's as per allopathy, as a psychiatrist, there's a bad news about it. I will give you a good news later, but I'll tell you the bad news first. The bad news about Alzheimer's is that it is a progressive disease. It does not stop. वो स्टार्ट होगा, वो डिटीरिएशन कंटिन्यू होता रहेगा. तो साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल है? सो वी हैव 3-4 मेडिसिन. डोनिपेजिल है, रिवेस्टिकबिन है, मेमेंटिन है, गैलेक्टबिन है. These are 3-4 medicines we have. They are important because in early diagnosis, if you diagnose early,
if you come early and report that you are forgetful on small matters, we can start those medicines. They slow down the progress of the disease. That is important. As a psychiatrist, that the medicine will, if otherwise the progress happens, in 3-4 years, it will extend to 10-15 years maybe. That is the good part. Why you need to go to a doctor and a psychiatrist to slow the progress. Then, important thing also comes to how can we prevent. There are lots of things you can do to prevent any degenerative condition. It starts with fundamentals, nothing big. Diet. Diet should be wholesome. In fact, I will start from one above that. The commonest one which is ignored, particularly for the adults, the senior, is hydration of water. Drinking water, because a lot of the major part of our brain is water. In fact, 70%, 80% of our body is water. So, having adequate water is very, very important for elderly, for anybody, but especially for elderly. I'll tell you why. Why is it important for elderly to be careful about proper and regular intake of water? Because your reflexes, your body, signals of feeling thirsty, they are slowed down. You don't feel thirsty only. As you grow older, because thirst starts from where? The body has cells. उस cell को पानी कम हो जाएगा, water decreases, the cell starts feeling thirsty. Then it will convey to the bigger part, the organ, then to the brain, and then you will feel thirsty. By the time you feel thirsty, your cells are literally starving for water. Literally. You are torturing the cells for water, lack of water, if you wait to feel thirsty. So important thing is that we should have water at regular intervals. About say 1.5 liters of water before a meal. A good time to have water is half an hour before meals. So have a glass or two of water half an hour before meals. It detoxifies your system, it hydrates you, it's good for your brain also. As I said, the major part of the brain or of the whole body is dependent on water. Next comes the important thing is food, diet. In diet, you have to have a balanced diet. See, basically, balanced diet is what? It has got minerals, vitamins, coenzymes. So, a simple technical way of taking care of your nutrition and diet is to, one is after 50, there are a lot of these medicines which are available, vitamin tablets, comprehensive vitamin plus mineral tablets, which after 40 or after 50 years of age, definitely every day you have one tablet. That is one simple, easy way to ensure that you are not suffering because of lack of vitamin deficiency, causing the body mechanism, the body functioning gets slowed down and deteriorates. And a general diet principle, especially for ladies, in the diet, try to see that when you make a mixed vegetable, you should definitely have a mixed vegetable every day. And the point to remember in that is have as many colors as possible. The more the colors, the better the mixed vegetable. Because different colors have got different minerals. So if you make a mixed vegetable of capsicum, the red one, the yellow one, the green one, and all the different colors, the more colorful your mixed vegetable, the better your food will be, balanced in terms of vitamins and minerals. Third comes very simple, exercise. How does exercise help? Exercise for short while. You should, get somewhat breathless. That is very important. Very short while. And if you can't walk and all, I suggest at this age having a stationary bike, a stationary cycle at home. It is because at this age, senior citizens,
If they do too much of walking, they end up spoiling their knees. Very common problem because there's osteoarthritis and all that, so it doesn't help. So I suggest having a stationary bike is a good idea because the pressure is on the knees and you can exert and get a little breathless. So that has got a lot of advantage. It helps your heart also. Your heart faces, gets tuned, practice to exercise and stress, artificial stress. And also, how it helps your Alzheimer's or the brain function is when you are getting, exercising little hard for a short while, 4, 5 minutes, 10 minutes, not more than that. Then the blood flow to the brain is increased. That is how it helps your brain. The purpose of exercise for the brain is increasing the blood flow. Then, when you are talking about physical exercise, the next common, natural thing we come to is brain exercise. They say in terms for muscles, body muscles, use it or lose it. So what you use will remain. If you leave it, you will lose it. So that applies for the body muscles. You go to a gym or you do some exercise, your muscle develops. The same is about the brain. We need to exercise it, challenge it, whether through puzzles, playing chess, remembering things, all sorts of, there's so many mind gym games. You can Google and practice them and whatever you like as per your favorite ideas. So these are the various things about, there are many more. But my intention of coming here today is something else. As I said, the bad news is Alzheimer's is a progressive disease. Medicines only help to slow down the progress, but the end is inevitable. Now the good news. Good news is coming from the field of meditation, and in particular the practice I have been researching all my life. A lot of my gains in life have been from that is Yoga Nidra. Yoga Nidra is a type of mindfulness exercise, and there's a lot of research done on it. Some part is corroborating with allopathy in terms of in neurology, in brain sciences. We have something very new, interesting concept which has come. When I did my medicine MBBS graduation, we were taught brain cells once dead, dead forever. Brain cannot improve once it is deteriorated. This is what I learned 35 years back. But last about 10 years or so, is a very new, important concept which has come, which is called neuroplasticity. Neuroplasticity is saying that no, that was wrong what we learned. The fact is that brain cells do continue to have got the capacity to regenerate, to form new connection between the nerve cells and regenerate. And that's a very, very, very important and interesting news for us. But unfortunately, allopathic medicines, there is nothing which can do that. The body does on its own to a certain extent. Whether if you see a paralysis patient, in 6 months, 1 year, they tend to recover some of the problems. That's by neuroplasticity. But that's the natural part. So as I said, there's no medicines really for it, but this practice of Yoga Nidra, it is helping a lot. It can enhance our neuroplasticity. How? Very, very fundamental thing. What is sleep? What is the purpose of sleep? Anybody? We all sleep 1/3 of our life. What is the purpose of sleep? Rest. Rest to what? Relaxation. What else? Yeah, regeneration. Who said regeneration? Wonderful. Actually, the purpose of sleep is only one. Regeneration, restoration, rejuvenation of your body and your mind.
all the repair work, maintenance work is done when you are sleeping. Your body cells like plumber, carpenter, electrician, they go all around and repair all your body cells. That's happening at the body level, including killing the cancer cells. We all have, you may be surprised to know, we have a continuous cancer going on in our bodies. And we have continuous soldiers of our cells in the body which kill those cancer cells. It's a continuous process. Only when our body soldiers lose, then the cancer is apparent. But I'm concerned about what I'm telling about the mind part. That sleep regenerates. 5 minutes? 2 minutes. Okay, I'll finish off. I'll just conclude in there. So, the point I want you to take home is this: that sleep is the only thing which can rejuvenate, which can restore you. But there's nothing else in Alzheimer's which can help you except Yoga Nidra. Yoga Nidra is a yogic sleep in which you go into a deep state of sleep. What we commonly go through is a very, very superficial level of sleep basically, because of that the restoration, the rejuvenation process does not happen adequately. But when you do Yoga Nidra, you go into, in EEG terms, we call it alpha waves. Alpha wave state is a deep sleep state, deep relaxation state. And in that state, your mind, your brain automatically will heal itself. Not only of the structural problems, including your fears, your phobias, your complexes, your anxieties, your depression, it works on everything. This is the thing I want you to remember. And last but not least, so you have to practice it regularly, very easy. And Yoga Nidra, you just have to lie down flat on the back, play an audio recording, 20-25 minutes, and just follow it. So easy to do physically also. And for Yoga Nidra, you can go to app, one or two places. The one is Bihar Yoga app. It has got Yoga Nidra practices in that, in English and Hindi. Beginners, intermediate version, you can do either. And so any more inquiries and about Yoga Nidra, I can take it later also. And later we'll try to have a session on actually conducting and learning Yoga Nidra. So my message to you is, please learn Yoga Nidra to prevent and cure Alzheimer's. Nothing else cures Alzheimer's. Thank you. Thank you so much, Dr. Raina. Now we will have meditation workshop by Master Vijay Kumar. He has over 30 years of experience. Mic stand. Mic stand. सभी को प्रणाम। आज सब यहाँ ये युवाओं को देख के मुझे बहुत आनंद मिल रहे हैं, आपके साथ टाइम बिताना। और फ़ोन करके व्यक्त करिए, दिस इज़ वे ऑफ लिविंग। जब आप ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, सर्व व्याधि का कारण अपने अंदर क्षमा नहीं रखते ना, हमें अपने आप को क्षमा नहीं करते, एक गिल्टी दोरनी में जीते हैं या दूसरे के ऊपर गुस्सा रखते हैं। आप अपने आप को क्षमा कर लीजिए और अन्य लोगों को भी क्षमा कीजिए। जो आप दूसरों के साथ अगर गलत ढंग से बिहेव किया है, जाके क्षमा मांगिए। और जो आपके साथ जो गलत ढंग से किया है, उनको क्षमा कर दीजिए। बस एक ही एक चीज है, या क्षमा करिए या भूल जाइए, तो सारा रोग निवारण हो जाते हैं। मगर अपना मन सीधा सुनते नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार हूँ। मैं बचपन से ध्यान कर रहा हूँ
और पूरा भारत घूम के ध्यान सिखा रहा हूँ। मैं जब से ध्यान कर रहा हूँ तब से मैं आई बिकम माई ओन डॉक्टर। इससे पहले मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रहते थे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहे कि पूरा माइंड के ऊपर है, तो जब से मैं ध्यान चालू किया तब से आई बिकेम माई ओन डॉक्टर। 30 साल से मैं एक दवा भी लिया नहीं हूँ। तो ये मेड मी पूरा भारत घूम के सबको इसका विशिष्टता बोलने के लिए। आपका स्मरण शक्ति बढ़ेंगे ध्यान से। सो ध्यान जितना आप करेंगे उतना स्मरण शक्ति बढ़ेंगे। आप डरने का चिंता नहीं है। हेडेक से लेकर कैंसर तक सभी व्याधियां निवारण हो ही जाते हैं, क्योंकि जैसा सोच वैसा आपका सोल्जर्स जो सेल्स काम करेंगे। अगर आपका सोच में कुछ हो नहीं पाएंगे, अभी ये मुझे व्याधि अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे, तो हो ही होंगे। इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है शाकाहारी बनो। डोंट किल एनी एनिमल्स फॉर योर टेस्ट बर्ड्स, दैट विल बिकम ए कर्स फॉर योर लाइफ। आपका सारे व्याधियों का मूल मांसाहार होता है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं PSSM सोसाइटी से आया हूँ। PSSM यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है। ये नॉट ओनली इन इंडिया है, पूरा वर्ल्ड में है, और ये नॉन रिलीजियस है, नॉन प्रॉफिटेबल है। ये संस्था इसलिए स्थापित किया है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ये है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। तो उन्होंने AG/MSc किया है, शादीशुदा है था, और 1 साल पहले समाधि लिया है। तो इन्होंने एक साइंटिस्ट है, सारे रिलीजन्स का जो स्पिरिचुअल ग्रंथ के ऊपर स्टडी करके बताया कि देयर इज नो